Our today's class is for 12th class. How you know? We are discussing the subject geology, which is also known as earth science. We are discussing the faults. What are faults? Faults are the fractured surfaces or cracks in the rocks, which we have discussed in the previous class. And also we have discussed some types of faults. In this class, we will also discuss two types of faults, that is known as thrust fault and strike slip fault. What is thrust fault? What is strike slip fault? Thrust fault or reverse fault, in which the hanging wall has moved up relative to the footwall and the fault slips always at an angle below 45 degree. In other words, we can say these thrust faults are just the reverse faults, which we have seen in the two types of faults, normal fault and reverse fault. In normal fault, what happens? The hanging wall of a rock formation moves downwards. While as in case of reverse fault, hanging wall moves upwards with respect to footwall in case of reverse. In case of normal, hanging wall moves towards the downward side with respect to the footwall. The footwall remains at its original position. So, this thrust fault is a type of reverse fault in which hanging wall moves towards upward side with respect to the footwall, and or we can say relative to the footwall, and one difference, one typical point, which is that the faults in case of thrust fault, the faults dip at angles which are below 45 degrees. So this is a thrust fault. Next, we will try to understand strike slip fault. These may be defined as faults. These strike slip faults may be defined as faults in which these faulted blocks moved against each other in an essentially horizontal direction, or we can say these faults usually have very steep slope, or we can say steep dip, which are very steep to vertical dips. For example, if we take the example of these two rock formations, in case of normal fault, this rock formation, part of rock formation, or we can say part of rock structure, in case of normal, moves towards downside, that is in vertical position. While in case of reverse fault, this hanging wall moves towards upward side, or part of rock structure which is a hanging wall moves upward side, which we have seen in the thrust fault. But in case of strike slip fault, these faults may be defined in which faulted blocks move against each other. These move in a horizontal direction. So neither they move down in a vertical nor move up in the vertical. They move against each other. We can say they move in a horizontal direction, just like this. They move in a horizontal direction. So this is known as the strike slip fault, in which the block moved against each other in a horizontal direction. If we try to understand in a simple way, थ्रस्ट फॉल्ट जो होते हैं ये रिवर्स टाइप के फॉल्ट, जैसे हम नॉर्मल और रिवर्स में देखा है, जहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट में हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड की ओर जाता है और विद रेस्पेक्ट टू द फुटवॉल, रिलेटेड टू द फुटवॉल, फुटवॉल अपनी जगह रहता है. इन केस ऑफ रिवर्स में हैंगिंग वॉल ऊपर की ओर जाता है, जो फुटवॉल होता है इसके रिलेटिव, इसको देख के हैंगिंग ऊपर चला जाता है जब इसके साथ इसको कंपेयर किया जाए, मुतवाजन किया जाए. लेकिन इसमें खास चीज है, इसमें जो फॉल्ट्स होते हैं, इस तरह के थ्रस्ट फॉल्ट जो होते हैं, वो हमेशा डिप करते हैं बिलो 45 डिग्री. नो डाउट यहाँ पे हैंगिंग वॉल जो है ऊपर चला गया है, लेकिन इट ऑलवेज डिप बिलो 45 डिग्री एंगल. सो दिस इज, इसको हम थ्रस्ट फॉल कहते हैं. ये एक तरह का रिवर्स फॉल्ट, सिंपल सा है, एक तरह का रिवर्स फॉल्ट होता है. और
इसमें हैंगिंग वॉल ऊपर चला जाता है, नेचुरली जो हैंगिंग रिवर्स फॉल्ट में हो जाता है, रिलेटिव इस फुटवॉल के रिलेटिव के इसको देख के विद रेस्पेक्ट टू द फुटवॉल हैंगिंग ऊपर चला जाता है, और जो फॉल्ट्स इस तरह के फॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा डिप करते हैं बिलो 45 डिग्री एंगल। ये सिंपल सा टाइप का फॉल्ट होता है, थ्रस्ट फॉल्ट। इसी तरह एक स्ट्राइक स्लिप का फॉल्ट होता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इसमें जो फॉल्टेड ब्लॉक्स होते हैं, जिन जहाँ पे फॉल्टिंग हो जाती है, जिन ब्लॉक्स में, जिन रॉक फॉर्मेशन, जिन रॉक स्ट्रक्चर्स में फॉल्टिंग हो जाती है, वो जो फॉल्टेड ब्लॉक्स है वो मूव अगेंस्ट ईच अदर, दे मूव अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट जो वो मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वाइल एज हमने देखा इसमें ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है, नॉर्मल रिवर्स में या इस थ्रस्ट में, लेकिन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट, ब्लॉक्स जो होते हैं फॉल्टेड ब्लॉक्स, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, जैसे जिस तरह ये दोनों इस तरह थे, बैट में ऐसे मूव किया है इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको हम ये सिंपल सी, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, दो ईंटें लाएंगे, दो ईंटों को इकट्ठा करके अगेंस्ट ईच अदर उनको खड़ा करके फिर एक ईंट को थोड़ा ऐसे मूव करेंगे, तो इस तरह से हमें समझ आएगा कि ये जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग होती है ये किस तरह हो जाती है। तो इसमें और एक चीज है, यूजुअली हम जब देखते हैं इसको, इसमें स्टीप वर्टिकल डिप्स होते हैं, वो बहुत ही स्टीप होते हैं, वर्टिकल डिप्स जो भी इसके होते हैं वो बहुत ही स्टीप होते हैं। तो आसान समझना है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और इसको हम आसानी से इन जो डायग्राम्स हैं इनके जरिए अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। सो दिस वाज regarding the types of fault in which we have discussed thrust fault and strike slip fault. These, no doubt, these faults are always related to the fault reverse and normal faults. So many features are, I think they are equal, but there is only a little difference in these two types of faults.